From this video, we are going to start the new chapter, that is chemical coordination and integration. And in this first video, we'll discuss the introduction and human endocrine system. हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम कैसी है एंड किससे बनी हुई है एंड कैसे फंक्शन करती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि टू सिस्टम हमारे बॉडी में है जो जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। कौन से फर्स्ट वन इज न्यूरल सिस्टम एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो फर्स्ट पार्ट कौन सा, ये हमारे बॉडी में टू सिस्टम कौन से नंबर वन न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो दो सिस्टम है कैसे काम करते हैं, दीज आर जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड एंड क्या करते हैं एंड इंटीग्रेट all the physiological functions in the body। तो वेरी क्लियर क्या है कि हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, फर्स्ट वन इज द न्यूरल सिस्टम एंड सेकंड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। दीज टू सिस्टम jointly coordinated and integrate all the physiological function in the body। फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है। These integrate all the physiological functions in the body। So हमने ये सिस्टम ऑलरेडी लर्न की है, न्यूरल सिस्टम which is made up of CNS and PNS that we have already completed। तो एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन में किससे बनी हुई है, तो एंडोक्राइन सिस्टम बनी हुई है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या ग्लैंड्स में। सो फर्स्ट ग्लैंड्स, एंड ग्लैंड्स का काम क्या है, टू सीक्रेट द केमिकल एंड दैट केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज हार्मोन्स एंड these hormones play a very important role in order to integrate all the physiological functions। तो क्या है, ग्लैंड से बनी हुई है हमारी। तो ग्लैंड्स के दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड and second one is exocrine gland। So very clear, glands is of two types, one is endocrine glands and second one is exocrine glands। Depending on the presence or absence of duct, उनमें duct है, suppose this is the one gland, अगर उसमें duct है तो डिपेंडिंग ऑन duct है या नहीं है, depending on that, so glands is of two types, endocrine glands and exocrine glands। So first we will consider the endocrine glands। These endocrine glands lack duct, उनको duct नहीं होती है। उनका जो सिक्रेशन है क्या है, केमिकल, that is the hormones। It is do not travels through the duct। क्या होता है, जो उनका सिक्रेशन हार्मोन्स इट इज डायरेक्टली पोर इट इनटू द ब्लड। क्यों, डक नहीं है तो उनका जो हार्मोन्स है डायरेक्टली ब्लड में पोर होता है एंड थ्रू द ब्लड इट इज डिफ्यूजेस टू द डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टिश्यू लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी पार्ट में जहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट लोकेशन पे लोकेटेड है, थ्रू ब्लड ये हार्मोन वहां पहुंचता है एंड कैरी आउट द फंक्शन। तो एंडोक्राइन लैक डक्ट, इसलिए उनको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड मतलब डक्ट ही नहीं है, तो डक्ट नहीं है तो दे पोर देयर सिक्रेशन, दे पोर देयर सिक्रेशन। उनका सिक्रेशन हम क्या कहते हैं, दे पोर देयर सिक्रेशन दैट इज हार्मोन्स। कहां पर, हार्मोन्स directly into blood and through the blood कहाँ जाता है, through the blood it reaches to the different body parts।
through blood, it reaches to different tissue और different body parts जो हमारे body में different location पे located. So this is one, right? कौन सा? Endocrine glands. Now second one is the exocrine gland. इसके opposite, they have duct. They have duct. उनको क्या होती है? Duct. And they pour their secretion through the duct. They pour their secretion. और उनका secretion क्या है? Their secretion, that is hormones. Secretion मतलब hormones, glands का. कहाँ पे? They pour their secretion, that is the hormones, through duct. जैसा कि वेरी वेल नोन एग्जांपल, हमें ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स लर्न करना है. एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल देता हूँ. लीवर. लीवर इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. सपोज दिस इज लीवर. लीवर का जो सिक्रेशन होगा, इट ट्रैवल्स, दैट इज द हार्मोन्स, पोर्ड थ्रू द डक्ट. एंड डक्ट कहाँ लेके जाएंगे? द पोर दैट सिक्रेशन इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द डक्ट. इसलिए वो कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. दे हैव डक्ट. दे डू नॉट हैव डक्ट. दे आर डक्टलेस. So they pour their secretion directly into the blood. They pour their secretion through the duct. Example is liver. So these are the two types of the glands. One is the endocrine gland and second one is the exocrine glands. हमें learn करना है human endocrine system, that is the endocrine glands. Second, हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या है? तो हमें यही पता चला है कि हार्मोन्स इज द केमिकल secreted by the glands, either endocrine or exocrine, particularly endocrine, right? So hormones क्या है? तो hormones is non nutrient chemical. कैसा है? non nutrient chemical. First point, non nutrient chemical. सेकंड क्या है? क्या काम करता है? तो it act as a intercellular messenger. Second point. First point क्या है? Hormone is a non-nutrient chemical, act as an intercellular messenger, and third, produced in small quantity, produced in trace amount. Trace मतलब small, produced in trace amount. Trace amount में produce होता है, and required in trace amount. लगता भी ट्रेस अमाउंट में. So this is hormone. So neural system, endocrine system, glands, hormones. Hormones क्या है? तो hormones is a non-nutrient chemical, act as an intercellular messenger, produced in trace amount, small quantity में लगता है, and required also in trace amount. This is the hormones. This is the scientific definition of the hormones. Now, ये इंट्रोडक्शन होने के बाद ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम कैसे कैसे हिस्से बना हुआ है. तो हमारे बॉडी में फर्स्ट हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन. देन ब्रेन में एक पिट्यूटरी, देन पीनियल, स्कल रीजन, थ्री थायराइड एंड पैराथायराइड, नेक रीजन में, टू चेस्ट रीजन में थाइमस, लोअर एब्डोमेन रीजन में पैनक्रियास and adrenal gland, that is the above the kidney, suprarenal gland, and gonads, that is testes in male and ovaries in female. These are the organized endocrine bodies in our human body. These are organized endocrine body and they function as endocrine glands, right? And in addition उसके भी अलावा है. So कौन से हुए? तो these ये होने के बाद अब कौन से endocrine glands है? These endocrine glands constitute the endocrine system in our body. हमारे बॉडी में endocrine system बनाती है and that is human endocrine system. So कौन से? Number one
hypothalamus. Second, pituitary. Third, pineal. These are present in the skull region, brain, or you call it as a skull. Skull region यहाँ पर है, right? Then two are present in the neck region. कौन से? Thyroid, parathyroid. कहाँ पर? These two. कहाँ पर? In neck region. Right? Then chest region, thymus. कहाँ पर? In chest region. Then lower abdomen. कौन सा? Pancreas. Pancreas and adrenal. These are the two glands situated in lower abdomen. Lower abdomen. And then last, that is the gonads. Gonads दो कौन से? First testes and second ovaries. Testes कहाँ? तो testes in male and ovaries in female. These are the gonads. These starting from this इसको नहीं कंसीडर करते, but it produce the हमें पता है कि this is a part of forebrain and which have a group of neurosecretory cells, and these neurosecretory cells produce the hormones उसे कहते हैं hypothalamic hormone. So it must be the part of endocrine system, वही रेगुलेट करता है. बट अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो स्कल रीजन में है, थायराइड, पैराथायराइड जो नेक रीजन में है, थाइमस जो चेस्ट रीजन में है, पैनक्रियास, एड्रिनल जो लोअर एब्डोमेन रीजन में है, एंड गोनाड दैट इज द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल. These are organized endocrine bodies and जिन्होंने हमारी एंडोक्राइन सिस्टम बनाई. These are ये पूरे के पूरे कैसे हैं? These are all are कैसे हैं? organized endocrine bodies in our body. ये पूरे के we learn एक के बाद हम उसको learn करेंगे. This is human endocrine system. ये क्या है? इसकी ग्लैंड्स है, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम बनी है जिसका सिक्रेशन है हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं? थ्रू द ब्लड कहाँ जाते हैं? डिफ्यूज टू द डिफरेंट टिश्यू पार्ट्स. अब इनको छोड़ के इन एडिशन टू these, इनको छोड़ के there are some glands in our body which also produce the hormones, or there are some organs in our body जो hormones produce करते हैं. कौन से? तो नंबर 1 gastric intestinal tract हार्मोन प्रोड्यूस करता है. सेकंड लिवर हार्मोन प्रोड्यूस करता है. थर्ड किडनी एंड फोर्थ हार्ट. these also produce the hormones. इसलिए इनको छोड़ के these are also the organs. endocrine organized endocrine body नहीं है, endocrine glands नहीं है. these are the organs, but still क्या करते हैं? produce the hormones. कौन से? in addition to this, number 1 gastrointestinal tract मतलब digestive system. Second, liver. Third, kidney. And fourth, heart. So these are the organs. Gastrointestinal tract मतलब the organs of the digestive system. Liver, kidney and heart. These are not the organized endocrine body, but क्या है? Organs है. फिर भी produce the
hormones, right? So this is human endocrine system. Organized endocrine bodies and some organs produce the hormones and उससे हमारी बनी हुई है human endocrine system. अगर हम स्टडी करेंगे कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में एंडोक्राइन सिस्टम कैसी है तो इट इज वेरी सिंपल विथ फ्यू हार्मोन्स and vertebrates में it's somewhat complex, well developed and with large number of hormones. So this is all about the human endocrine system. In the next video we'll discuss the first, that is the hypothalamus and its hormone.